टेक्स्ट पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर, इसे भी देख लेते हैं वीडियो, क्या ख्याल है, सुन ले इसका वीडियो आर्किटेक्चर का। जी इसका भी देख लेते हैं ताकि पता तो चल जाए कि चलिए। बिहाइंड द सीन हो क्या अच्छा, है। वीडियो वॉइस वॉइस जो है वो मुझे बता दीजिए कि वीडियो की आ रही है या नहीं आ रही। जी। नहीं हमें नहीं आई। अच्छा यार, ये वॉइस कैसे, मतलब इसकी जो है जब वो आपने लो। शेयर पे क्लिक किया था ना तो नीचे वो लेफ्ट साइड पे शेयर शेयर साउंड। वो चेक कर। Let's study the transformer जी, आ रही है architecture. आवाज। आ रही। चले ठीक है, मतलब। This video is the introductory video to the encoders, decoders, and encoder-decoder series of videos. In this series, we'll try to understand what makes a transformer network, and we'll try to explain it in simple, high-level terms. No advanced understanding of neural networks is necessary, but an understanding of basic vectors and tensors may help. To get started, we'll take up this diagram from the original transformer paper entitled Attention is All You Need by Vaswani et al. As we'll see here, we can leverage only some parts of it according to what we're trying to do. We won't dive into the specific layers building up that architecture, but we'll try to understand the different ways this architecture can be used. Let's first start by splitting that architecture into two parts. On the left, we have the encoder, and on the right, the decoder. These two can be used together, but they can also be used independently. Let's understand how these work. The encoder accepts inputs that represent text. It converts this text, these words, into numerical representations. These numerical representations can also be called embeddings or features. We'll see that it uses the self-attention mechanism as its main component. And we recommend you check out the video on encoders specifically to understand what is this numerical representation, as well as how it works. We'll study the self-attention mechanism in more detail, as well as its bidirectional properties. The decoder is similar to the encoder. It can also accept text inputs. It uses a similar mechanism as the encoder, which is the masked self-attention as well. It differs from the encoder due to its unidirectional feature, and is traditionally used in an autoregressive manner. Here too, we recommend you check out the video on decoders especially to understand how all of this works. Combining the two parts results in what is known as an encoder-decoder, or a sequence-to-sequence transformer. The encoder accepts inputs and computes a high-level representation of those inputs. These outputs are then passed to the decoder. The decoder uses the encoder's outputs alongside other inputs to generate a prediction. It then predicts an output, which it will reuse in future iterations, hence the term autoregressive. Finally, to get an understanding of encoders decoders as a whole, we recommend you check out the video on encoder decoders. जैन भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आई थिंक आपका माइक माइक नहीं हो रहा है। अच्छा सॉरी, अब आ रही है आवाज मेरी। जी अब आ रही है आपकी आवाज़। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, मतलब उसने ये डिफाइन किया है कि इनकोडर और डिकोडर जो है वो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है। जो हमारा जो टेक्स्ट है, जब हम इसे अपने इनकोडर में से गुजारते हैं तो ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन उसे देता है, ताकि जो ट्रांसफॉर्मर्स है उसे लर्न करे। ठीक। और डिकोडर जो है वो उसके अगेंस्ट फिर वो हमें रिजल्ट जो है जनरेट करके देता है। और इनकोडर में जो है वो काफी चीजें मजीद और भी ऐड की हुई हैं इन्होंने। कुछ अटेंशन लेयर्स हैं, मल्टी हेड अटेंशन लेयर्स हैं, फिर उनके उसकी कुछ कीज एंड वैल्यूज आती हैं, और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेके काफी, मतलब काफी लंबा चौड़ा सीन है इसका इनकोडर का। अच्छा जी, ये अटेंशन लेयर्स आ गई। और इसके अलावा ओरिजिनल आर्किटेक्चर पे है। ये आ गया जी, आर्किटेक्चर आ गया इसका। चेक पॉइंट्स है इसमें मॉडल के,
आर्किटेक्चर क्या है जी, एक स्केलेटन है पूरा मॉडल का, और चेक पॉइंट्स आर वेट्स दैट विल बी लोडेड इन अ गिवन आर्किटेक्चर। इसके अलावा मॉडल ब्रेला टर्म, अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल BERT is architecture BERT case set of weights trained by Google team first release BERT checkpoints, however one can see is about model BERT based case model। अच्छा जी, इनकोडर पे आते हैं नीचे। इनकोडर मॉडल्स, ये कुछ मॉडल्स के नाम बताए हुए इन्होंने जो इनकोडर्स को फॉलो करते हैं। देख लेते हैं ये क्या कह रहा है इसमें। In this video, we'll study the encoder architecture. An example of a popular encoder-only architecture is BERT, which is the most popular model of its kind. Let's first start by understanding how it works. We'll use a small example using 3 words. We use these as inputs and pass them through the encoder. We retrieve a numerical representation of each word. Here, for example, the encoder converts those 3 words "Welcome to NYC" in these 3 sequences of numbers. The encoder outputs exactly 1 sequence of numbers per input word. This numerical representation can also be called a feature vector or a feature tensor. Let's dive in this representation. It contains 1 vector per word that was passed through the encoder. Each of these vectors is a numerical representation of the word in question. The dimension of that vector is defined by the architecture of the model. For today's BERT model, it is 700. These representations contain the value of a word, but काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। contextualized. For example, the vector attributed to the word "to" isn't the representation of only the "to" word. It also takes into account the words around it, which we call the context. As in, it looks to the left context, the words on the left of the one we're studying, here the word "welcome," and the context on the right, here the word "NYC," and it outputs a value for the word given its context. It is therefore a contextualized value. One could say that the vector of 768 values holds the meaning of the word within the text. It does this thanks to the self-attention mechanism. The self-attention mechanism relates to different positions or different words in a single sequence in order to compute a representation of that sequence. As we've seen before, this means that the resulting representation of a word has been affected by other words in the sequence. We won't dive into the specifics here, but we'll offer some further readings if you want to get a better understanding at what happens under the hood. So when should one use an encoder? Encoders can be used as standalone models in a wide variety of tasks. For example, BERT, arguably the most famous transformer model, is a standalone encoder model, and at the time of release, it be the state-of-the-art in many sequence classification tasks, question answering tasks, and masked language modeling, to only cite a few. The idea is that encoders are very powerful at extracting vectors that carry meaningful information about a sequence. This vector can then be handled down the road by additional neurons to make sense of them. Let's take a look at some examples where encoders really shine. First of all, masked language modeling, or MLM. It's the task of predicting a hidden word in a sequence of words. Here, for example, we have hidden the word between "my" and "is." This is one of the objectives with which BERT was trained. It was trained to predict hidden words in a sequence. Encoders shine in this scenario in particular, as bidirectional information is crucial here. If we didn't have the words on the right, "is Sylvain" and the dot, then there's very little chance that BERT would have been able to identify "name" as the correct word. The encoder needs to have a good understanding of the sequence in order to predict a masked word,
as even if the text is grammatically correct, it does not necessarily make sense in the context of the sequence. As mentioned earlier, encoders are good at doing sequence classification. Sentiment analysis is an example of sequence classification. The model's aim is to identify the sentiment of a sequence. It can range from giving a sequence a rating from 1 to 5 stars if doing review analysis, to giving a positive or negative rating to a sequence, which is what is shown here. For example, here, given the two sequences, we use the model to compute a prediction and to classify the sequences among these two classes, positive and negative. While the two sequences are very similar, containing the same words, the meaning is entirely different, and the encoder model is able to grasp that difference. अच्छा सर, ये जो इनकोडर है ना, बेसिकली करता ये है कि इसके अंदर ना एक मॉड्यूल लगा हुआ है सेल्फ अटेंशन सिस्टम का। अच्छा, जब हम इसे एक वर्ड देते हैं अपना, आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ। अच्छा, जब है ना हम इसे एक वर्ड देते हैं, कोई भी सिंटैक्स, तो करता ये है कि ये उसे सेल्फ अटेंशन सिस्टम को पास कर देता है और वो इसका एक वेक्टर जनरेट कर देता है। अब जो उस वेक्टर की डायमेंशन है वो 512 डायमेंशंस का वेक्टर है जो जनरेट करता है। ठीक है। अब वो होता ये है कि जब हम इसे, वो इस वेक्टर को जनरेट करता है, वेक्टर आगे मजीद ये है कि वो जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है वो उसे पास कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो इनकोडर है ये अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करता है। अच्छा जी, शौकत साहब आ गए हैं? जी जी मैं आ गया हूँ। जी जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, करें सर, फिर कंटिन्यू करें काइंडली। आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया ये वाला। कौन से टॉपिक पे हैं? इनकोडर का। अच्छा, जी हाँ। सही है सही है। चलिए मैं शेयर कर लेता हूँ। जी। जैन भाई आप स्टॉप कर दें शेयर, क्योंकि किसी के पास वो जा रही है और किसी के पास सरकी जा रही। स्लो है मेरे पास नेटवर्क शायद। नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखें नेटवर्क प्रॉब्लम है, लोड नहीं हो रहा सही। सर आई थिंक दो दो चीज़ें हैं। एक तो आप ब्राउजिंग कर रहे हैं और साथ में जूम भी चला रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी क्या स्लो चला हुआ रहे हैं? है। एक साइड पे जूम लगा हुआ है और दूसरी साइड पे आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से दोनों में से कोई एक चीज़ बंद कर दें, फिर सही हो जाएगा नेट। हम्म, सर जो आप कोई और आप शेयर कर लें फिर शायद तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे से तो नहीं, ये चल ही नहीं रहा है, मेरा नेट ही नहीं चल रहा है वैसे। अब आ गया है, आ गया। ये एनकोडर मॉडल कर लिए? जी हाँ, इनकोडर हो गया। अब डिकोडर करना है? जी। अच्छा,
सर एक चीज पूछूं, एक सवाल। जी जी। सर जैसे ये कह रहे हैं कि लेबल और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो जैसे अब जैसे हम अपने ट्विटर पर काम कर रहे थे, ट्वीट्स पे काम कर रहे थे, तो हम सिंपली रॉ डेटा उठाकर ट्रांसफार्मर में डाल दें, हमें ईडीए वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नहीं, हमें उसको बता क्लीन देगा। तो मेरे ख्याल करना पड़ेगा, क्लीन तो जी करना सर। पड़ेगा। सर देखें, अगर तो हम सेंटीमेंट एनालिसिस कर रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें मतलब ईडीए तो सभी पे परफॉर्म करना पड़ेगा ना, डाटा टेक्स्ट को हमें क्लीन तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद ये है कि हमें उसके लेबल्स भी देने पड़ेंगे क्लासिफिकेशन में, हम उसके लेबल भी पास करेंगे ना। वो तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के लिए है भाई, टेक्स्ट जनरेशन के लिए तो हम कोई भी मतलब लेबल नहीं देंगे। सिंपल एक मतलब कह लें, या टेक्स्ट वैसे उठा के मॉडल को दे देंगे, या उसकी एक टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लेंगे, उस फाइल को हम रीड करवा के डायरेक्ट मॉडल को पास कर देंगे। लेकिन इसमें उसने जो एक वीडियो में कहा था, ये इधर नेट बहुत स्लो है मेरा, आ गया यहाँ, ये वीडियो में इसने बोला था, यहाँ इसने जो बोला था, ये ज़रा कितने मिनट, 2-3 मिनट, 3 मिनट की है वीडियो, ज़रा दोबारा 4 मिनट की। What is transfer learning? ये The idea of transfer learning is to leverage the knowledge acquired by a model trained with lots of data on another task. The model A will be trained specifically for task A. Now let's say you want to train model B for a different task. One option would be to train the model from scratch. This could take lots of computation, time, and data. Instead, we could initialize model B with the same weights as model A, transferring the knowledge of model A on task B. When training from scratch, all the model's weights are initialized randomly. In this example, we are training a BERT model on the task of recognizing if two sentences are similar or not. On the left, it's trained from scratch, and on the right, it's fine-tuning a pre-trained model. As we can see, using transfer learning on the pre-trained model yields better results. And it doesn't matter if you train longer. The training from scratch is capped around 70% accuracy, while the pre-trained model beats the 86% easily. This is because pre-trained models are usually trained on large amounts of data that provides the model with a statistical understanding of the language used during pre-training. In computer vision, transfer learning has been applied successfully for almost 10 years. Models are frequently pre-trained on ImageNet, a dataset containing 1.2 million of photo images. Each image is classified by one of 1,000 labels. Training like this, on labeled data, is called supervised learning. In natural language processing, transfer learning is a bit more recent. A key difference with ImageNet is that the training is usually self-supervised, which means it doesn't require human annotation for the labels. अब यहाँ पे आप देखें ना, ये जो इसने बात की है, is a bit more recent. A key difference with ImageNet is that the training is usually self-supervised, which means it doesn't require human annotation for the label. It doesn't require human annotation for labels. इसमें जो आपके NLP के अंदर, यानी कि इसमें जो आपके पास ये देखें ना, training like this on label data is called supervised learning. ठीक है, It's called supervised learning. ठीक है। In natural language processing, transfer learning is a bit more अब recent. आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, जिसमें आप ये स्पेसिफिकली ट्रांसफर लर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है। A key difference with ImageNet is that the training is usually अब आपके self-supervised. पास यहाँ ट्रेनिंग जो है वो सेल्फ सुपरवाइज्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ट्रेनिंग सेल्फ सुपरवाइज्ड है। दैट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग को जो आपके लेबल्स को एनोटेट करने की जरूरत नहीं है, अभी ये बता रहा है यहीं पे। Which means it doesn't require human annotation for the अब ये labels. इमेजिनेशन, ये तो खैर कि वो ये ऑटो जनरेटेड कह रहे हैं ना, तो उसने लिखा है, उसने बताया कि which means it does not need require human annotation of the labels. ये इसके बारे में ये क्या है, मतलब हमें तो ट्रांसफॉर्मर का पता नहीं है ना,
जैन भाई आपने कुछ पहले किया होगा, तो ये क्या किस चीज़ का कह रहा है? सर बेसिकली अभी तो ये बात कर रहा है ऑटो रिग्रेसिव हम्म, मॉडल की, टेक्स्ट जनरेशन की। ठीक है। अच्छा। मेरी बात फिर वही आ जाती है कि जो टेक्स्ट जनरेशन है ना, उसमें हमें लेबल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक हम्म। है। अभी मतलब क्या पता कि ये सिर्फ इसी मॉडल की बात कर रहा है, क्योंकि देखे ना GPT-2 की बात कर रहा है ये। ठीक है। और इसमें जो जनरेशन के लिए टेक्स्ट है उसमें हम लेबल्स नहीं देते अपने मॉडल को। ठीक है, क्योंकि अच्छा। हम कौन सा उसकी कोई क्लासिफिकेशन टाइप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास। जब हम मतलब कोई सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे, तब हम डेफिनेटली अपने मॉडल को लेबल्स तो बताएंगे ना अपने टेक्स्ट डाटा का। अच्छा अच्छा। जैन भाई यहाँ पे ना एक बात है, ये मतलब कि आप कह रहे हैं कि टेक्स्ट जनरेशन में हमें लेबल देने की जरूरत नहीं है, तो जब तक हम उसे बताएंगे नहीं डेटा कौन सा जनरेट करना है तो वो कैसे करेगा? सर हम जब उससे फाइन ट्यून करेंगे, टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है। और अब वो टेक्स्ट के बिहाफ पे हमें टेक्स्ट जो है वो जनरेशन दे करेगा ना टेक्स्ट की। ठीक है। अच्छा हम अच्छा। हम्म। उसे एक टेक्स्ट देंगे, जैसे कल बात हो रही थी कि हम जी। उसे टेक्स्ट दे दिया, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है। और उसने हमें वो जनरेट करके बता दिया। अब उसमें कोई ये तो थोड़ी ना बता रहा है कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका क्या लेबल होगा। हमने ना तो उससे कोई लेबल पूछा है, ना उसे ये पूछा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव में है। ठीक है। हमने सिंपल उसे ये कहा कि भाई हमें टेक्स्ट इस सेंटेंस के हिसाब से हमें टेक्स्ट जनरेट कर दो। सही है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर लर्निंग की। तो अब जब ट्रांसफर लर्निंग की बात, पहले तो देखें ना, हमने जो कल मॉडल सारे टेस्ट किए थे, वो आपके ऑलरेडी यानी कि उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे वो ट्रेंड हुए हुए हैं। आप उसमें डाटा डालें, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे जो है ना, आपको वो आंसर दे रहे हैं स्ट्रेट अवे। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल में वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना, आपको वो आपको आंसर दे रहा है। ठीक है। तो साथ साथ छोटा सा प्रॉब्लम क्यों नहीं इसके साथ हम उसको करते ट्रांसफार्मर यूज करके, ताकि थोड़ा हमारे अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। इसको कर लेते हैं ये अभी सर फ्लो ये में है ना सारा। जैसे हम्म, आप सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में जाएंगे ना, तो वहां पे सारी चीजें जो है आई थिंक मुझे लगता है कि क्लियर होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें काफी इन्होंने बताया हुआ है प्रैक्टिकल अच्छा। वर्क, कैसे मॉडल ट्रेन करना है, कैसे उसे मतलब डाटा देना है, ये वो सारा चलें सिस्टम। ठीक है। चलें अब डिकोडर की तरफ चलते हैं फिर आगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट इसी इसी जगह पे ही क्लियर हो जाएं। सही कह रहे हैं आप। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके शायद मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा इसको गो थ्रू करने से सारा ट्रांसफॉर्म हिफ्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ हो सकता है आपको एक रिसोर्स ये है, किसी और रिसोर्स की तरफ जाएं, किसी और रिसोर्स की जाएं, मतलब स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको मिसाल है 40% क्लियर हो जाता है, कहीं से 10% 15% कहीं और से क्लियर हो जाता है। इस तरीके से जो होता है हिसाब किताब। तो ये देखते हैं डिकोडर मॉडल देखते हैं। अच्छा जी, डिकोडर्स क्या होते हैं? In this video, we'll study the decoder architecture. An example of a popular decoder-only architecture is GPT-2. In order to understand how decoders work, we recommend taking a look at the video regarding encoders. They're extremely similar to decoders. One can use a decoder for most of the same tasks as an encoder, albeit with generally a little loss of performance. Let's take the same approach we have taken with the encoder to try and understand the architectural differences between an encoder and a decoder. We'll use a small example using 3 words. We pass them through the decoder. We retrieve a numerical representation for each word. Here, for example, the decoder converts the 3 words welcome to NYC in these 3 sequences of numbers. The decoder outputs exactly 1 sequence of numbers per input word. This numerical representation can also be called a feature vector or a feature tensor. Let's dive in this representation. It contains 1 vector per word that was passed through the decoder. Each of these vectors is a numerical representation of the word in question. The dimension of that vector is defined by the architecture of the model.
Where the decoder differs from the encoder is principally with its self-attention mechanism. It's using what is called masked self-attention. Here, for example, if we focus on the word to, we'll see that its vector is absolutely unmodified by the NYC word. That's because all the words on the right, also known as the right context of the word, is masked, rather than benefiting from all the words on the left and right, so the bidirectional context. Decoders only have access to a single context, which can be the left context or the right context. The masked self-attention mechanism differs from the self-attention mechanism by using an additional mask to hide the context on either side of the word. The word's numerical representation will not be affected by the words in the hidden context. So when should one use a decoder? Decoders, like encoders, can be used as standalone models. As they generate a numerical representation, they can also be used in a wide variety of tasks. However, the strength of a decoder lies in the way a word can only have access to its left context. Having only access to their left context, they're inherently good at text generation, the ability to generate a word or a sequence of words given a known sequence of words. This is known as causal language modeling or natural language generation. Here's an example of how causal language modeling works. We start with an initial word, which is my. We use this as input for the decoder. The model outputs a vector of numbers, and this vector contains information about the sequence, which is here a single word. We apply a small transformation to that vector so that it maps to all the words known by the model, which is a mapping that we'll see later called a language modeling head. We identify that the model believes that the most probable following word is name. We then take that new word and add it to the initial sequence. From my, we are now at my name. This is where the autoregressive aspect comes in. Autoregressive models reuse their past outputs as inputs in the following steps. Once again, we do the exact same operation. We cast that sequence through the decoder and retrieve the most probable following word. In this case, it is the word is. We repeat the operation until we're satisfied. From a single word, we've now generated a full sentence. We decide to stop there, but we could continue for a while. GPT-2, for example, has a maximum context size of 1024. We could eventually generate up to 1024 words, and the decoder would still have some memory of the first words in the sequence. So the decoder models only use the decoder of a transformer model. अच्छा, हमने अभी डिकोडर की बात की ना, तो इसमें सिर्फ डिकोडर यूज होते हैं. At each stage for a given word, the attention layers can only access the words positioned before it in the sentence. These models are often called auto-regressive models. That means कि आपका जो एक वर्ड है उसके लेफ्ट या राइट के ऊपर जो वर्ड होगा वो उसको बस यानी कि उसको आइडेंटिफाई करेगा. ऐसे ही है जो मैंने समझा हूँ इससे. तो दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो वीडियो में बता रहा था, तो उससे जो मैंने मतलब जो किया है रिजल्ट, उससे ये पता चल रहा था कि जो आपका डिकोडर मॉडल है, डिकोडर मॉडल जो है आपके वर्ड की जो लेफ्ट या राइट के ऊपर जो वर्ड होते हैं उसको जो है मतलब एक वर्ड है उसके लेफ्ट के क्या आएगा या राइट के ऊपर क्या आएगा, तो उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकता है. जी हाँ, बिल्कुल. मतलब नेक्स्ट वर्ड को देखेगा ना कि पिछले वर्ड के हिसाब से अभी नेक्स्ट वर्ड वो क्या जनरेट करेगा. सही. जी हाँ. तो डिकोडर मॉडल जो है वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी कहलाते हैं. जैसे जी हाँ. द pre-training of the decoder model usually revolves around predicting the next word in the. अच्छा, ठीक है. मतलब
हर जो वर्ड है उससे अगला वर्ड क्या होगा, मतलब वो ये वो आइडेंटिफाई करता है। These models are best suited for tasks involving text generation. और आपके पास जो डिकोडर मॉडल्स हैं वो ये हैं, इस तरह के हैं, CTRL, GPT, GPT-2, ट्रांसफॉर्मर, एक्सेल। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। अब आज आपके पास से डिफरेंट मॉडल है ना, आपके पास एनकोडर मॉडल्स हैं, डिकोडर मॉडल्स हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स हैं। तो ये 3 किस्म के मॉडल्स हैं। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल क्या होते हैं ये देखते हैं। In this video, we'll study the encoder-decoder architecture. An example of a popular encoder-decoder model is T5. In order to understand how the encoder-decoder works, we recommend to check out the videos on encoders and decoders as standalone models. Understanding how they work individually will help understanding how an encoder-decoder works. Let's start from what we've seen about the encoder. The encoder takes words as inputs, casts them through the encoder, and retrieves a numerical representation for each word cast through it. We now know that this numerical representation holds information about the meaning of the sequence. Let's put this aside and add the decoder to the diagram. In this scenario, we're using the decoder in a manner that we haven't seen before. We're passing the outputs of the encoder directly to it. Additionally to the encoder outputs, we also give the decoder a sequence. When prompting the decoder for an output with no initial sequence, we can give it the value that indicates the start of a sequence. And that's where the encoder-decoder magic happens. The encoder accepts a sequence as input. It computes a prediction and outputs a numerical representation. Then, it sends that over to the decoder. It has in a sense encoded that sequence. And the decoder, in turn, using this input alongside its usual sequence input, will take a stab at decoding the sequence. The decoder decodes the sequence and outputs a word. As of now, we don't really need to make sense of that word, but we can understand that the decoder is essentially decoding what the encoder has output. The start of sequence word here indicates that it should start decoding the sequence. Now that we have both the encoder numerical representation and an initial generated word, we don't need the encoder anymore. As we have seen before with the decoder, it can act in an autoregressive manner. The word it has just output can now be used as an input. This, in combination with the numerical representation output by the encoder, can now be used to generate a second word. Please note that the first word is still here, as the model still outputs it. However, we have grayed it out as we have no need for it anymore. We can continue on and on, for example, until the decoder outputs a value that we consider a stopping value, like a dot meaning the end of a sequence. Here we've seen the full mechanism of the encoder-decoder transformer. Let's go over it one more time. We have an initial sequence that is sent to the encoder. That encoder output is then sent to the decoder for it to be decoded. While it can now discard the encoder after a single use, the decoder will be used several times, until we have generated every word that we need. So let's see a concrete example with translation language modeling, also called transduction, which is the act of translating a sequence. Here we would like to translate this English sequence, "Welcome to NYC," in French. We're using a transformer model that is trained for that task explicitly. We use the encoder to create a representation of the English sentence. We cast this to the decoder. With the use of the start of sequence word, we ask it to output the first word. It outputs bienvenue, which means welcome. And we then use bienvenue as the input sequence for the decoder. This, alongside the encoder numerical representation, allows the decoder to predict the second word, which is to in English. Finally, we ask the decoder to predict a third word. It predicts NYC, which is correct. We've translated the sentence. Where the encoder-decoder really shines is that we have an encoder and a decoder, which often do not share weights. Therefore, we have an entire block, the encoder, that can be trained to understand the sequence and extract the relevant information. For the translation scenario we've seen earlier, for example, this would mean parsing and understanding what was said in the English language. It would mean extracting information from that language and putting all of that in a vector dense in information. On the other hand, we have the decoder, whose sole purpose is to decode the numerical representation output by the encoder. This decoder can be specialized in a completely different language, or even modality like images or speech. Encoders-decoders are special for several reasons. Firstly, they're able to manage sequence-to-sequence tasks, like translation that we have just seen.
Secondly, the weights between the encoder and the decoder parts are not necessarily shared. Let's take another example of translation. Here, we're translating transformers are. Let's take another example of translation. ये क्या कहते हैं कि सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क, मैनी टू मैनी ट्रांसलेशन, समराइजेशन और वेट्स आर नॉट नेसेसरली शेयर्ड अक्रॉस द एनकोडर एंड डिकोडर। अपने आप आपस में वेट्स नहीं शेयर होते इनके एनकोडर डिकोडर के। और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन। Here, we're translating sir. transformers are powerful in French. Firstly, जी। this means that. अच्छा सर, ये ना मैंने एक लिंक शेयर किया है, जरा ओपन जी। कीजिएगा इसे। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग अ मॉडल विद केरस। अच्छा ठीक है। और इसके साथ ही ये बस यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे ये भी थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ पे उन्होंने इसकी क्लासेस भी डिफाइन की हुई हैं। अच्छा ठीक है, मतलब जी नंबर्स ऑफ लेबल्स यहाँ पे जब बात हो रही थी ना लेबल्स की, यहाँ पे होगा जी, उन्होंने कहीं पे लेबल कॉलम्स, लेबल। थोड़ा नीचे आइएगा जरा। नीचे आइएगा, नीचे आइएगा। हाँ बस यहीं पे ये देखें, ये जो टास्क, बस बस यहीं पे ये जो टास्क है हमारे पास, थोड़ा ऊपर। सही। किधर गया वो, वीडियोस के नीचे था। सो अच्छा इसका ना एंड हो रहा है।